हे गाइस, दिस इज स्वर्णिम एंड आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सैंडविच। पॉइंट है कि बिल्कुल टेस्टी होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल से भरा हुआ, न्यूट्रिशियस होना चाहिए और बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। एंड सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेड को प्री ग्रिल कर लेंगे। नाउ आई एम प्री ग्रिलिंग दिस ब्रेड बिकॉज मेरे को सैंडविच ग्रिल नहीं करना है, मेरे को उसके अंदर का सामान ग्रिल नहीं करना है बिकॉज आई लाइक टू ईट इट कोल्ड, राइट। सो आई एम ओनली गोइंग टू ग्रिल द ब्रेड। तो हम ये ब्रेड स्लाइसेस को यहाँ रख करके इसको ग्रिल में डाल देंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे सो दैट इट ग्रिल्स प्रॉपरली। और जब तक ये ग्रिल होता है तब तक हम बाकी सामान तैयार करेंगे। अगेन टारगेट इज़ 5 मिनट्स, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मेक इट। ओके, लेट मी गेट माई नाइफ। और मैंने चिकन सलामी मंगाई हुई है, सो विल बी यूजिंग वन लॉट ऑफ चिकन सलामी इन दिस सैंडविच। सो इसको भी डिफ्रॉस्ट कर लेते हैं। विल पुट इट फॉर 1.5 minutes। ओके, लीव्स पूरी यूज़ करेंगे। वी जस्ट हैव टू चॉप द टोमेटो ऑफ एंड चॉप द अनियन ऑफ। सबसे पहले टोमेटो, ऐसे इतना पतला स्लाइस नहीं चाहिए, थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं इसको। नाउ मेकिंग 2 सैंडविचेस, तो अभी एक की ब्रेड डाली है, दूसरी की बाद में डालेंगे। एंड देन टोमेटोज हो गए हैं, लेट्स कट द अनियंस। एंड आई थिंक ब्रेड जो है वो अभी पूरी ग्रिल नहीं हुई, विल कीप इट फॉर सम टाइम। आई जस्ट डोंट वांट इट टू बी ओवर कुक्ड। Again, half onion is good enough for the sandwich, ज़्यादा अनियन नहीं डालेंगे। And let me see, salamis are also toasted. These are chicken salamis. Let me see, इसको पलटने की ज़रूरत है क्या? थोड़ा सा ग्रिलिंग जो है वो होना ज़रूरी है। इट्स एन ओल्ड ग्रिल, सो थोड़ा सा परेशानी देती है। एंड व्हाट आई एम यूजिंग टुडे इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग fresh mozzarella. And unlike the mozzarella that we order for unlike the mozzarella we order, for pizzas, which is uh, the hard dry mozzarella, this is fresh mozzarella in brine. तो ये काफ़ी महंगी भी है, ऑलमोस्ट 2x the price of normal mozzarella. But this is the authentic fresh mozzarella जो most of the Italian cuisines में डली हुई होती है. So you look at it, this is a fresh ball of mozzarella dipped in brine. And we'll wash it, get the brine out of it. And again we'll cut it into pieces. And this is really an awesome piece. क्योंकि जो फ्रेश चीज़ का जो टेस्ट आता है, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ पनीर जैसा होता है। इट्स नॉट लाइक दैट रेगुलर चीज़ विच यू ईट।
So 1, 2, 3 will go in sandwich 1, and then 1, 2, 3 will go in sandwich 2. I think हम 5 मिनट के टारगेट को तो बीट नहीं कर रहे हैं, but let's see what we are able to do. But yeah, remember I'm cooking 2 sandwiches, not 1, right? तो 5-5 मिनट का एक सैंडविच रहेगा, टोटल दोनों सैंडविच मिला के 10 मिनट में बन जाए. So we have actually achieved our target. So what I'll do now is I'll put the second bread, maybe we can call them the topping breads, and start grilling them. Actually, ये जो bread होती है ना थोड़ी पतली होती हैं. These are cut very thin, but you know if you bring the whole bread and then cut it yourself, तो आप मोटे पीस काट सकते हो जो सैंडविच में यूजुअली जाते हैं. Okay, we'll start with a mayo. I'm still using my barbecue mayo, which was there since long. खत्म नहीं हुआ है अभी. Let me spread it with a spoon. So ये हमारा बेस बन गया है सैंडविच का. Yeah. Let me also get salt and pepper. ये पिछली रेसिपी से बचा हुआ है, अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, तो I'm just putting this salt and pepper here. And let's start. So bottom layer में हम mint डालेंगे. Actually I wanted to use parsley, but parsley है नहीं घर पे अभी. So we'll use mint in the bottom layer. And we'll also add the coriander in the bottom layer. Now coriander usually don't go into traditional sandwiches, but अभी कुछ green डालना था, green leafy डालना था, और सिर्फ यही 2 आइटम अवेलेबल हैं, right? Okay, then we'll go with tomatoes. So 1, 2, 3 tomatoes, and same goes here, 1, 2, and 3 tomatoes. Salt and pepper थोड़ा डाल लेते हैं. First layer, salt and pepper. Yes. Then let's put the meat first. So 1, 2, 3 layers of salami, and same goes here, 1, 2, 3 layers of chicken salami, and then the top layer, which is your mozzarella cheese, which will go like this. And the last layer, which is onions. I usually like to put my onions on top. You might have seen it in my burger videos also. So onions will go on the top. And then I'll get my next 2 slices. Actually उतना crispy हुआ नहीं है. Let me put it for a few more seconds. Switch it off. Take it out now. Put them here. Put some more mayonnaise on the top layer. Yeah. And in overall time of 10 minutes, your 2 sandwiches are ready, which is 5 minutes per sandwich. Now, one of the sandwich my wife will eat, but let me take the other sandwich for myself, and maybe I can cut it into 2 pieces, and that would taste better and it will be more manageable also. So yeah, these are our 2 sandwiches: leafy, nutritious, fresh cheese mozzarella salami sandwiches. And maybe I should enjoy them in my balcony. Let me take this towel off and give you the full view. I think mint mixed with mozzarella cheese is awesome.